Assalamu alaikum, dear student. Again, I come to you for a second lecture of biology, which is mitosis and meiosis, their processes, their introduction and differences. Mitosis and meiosis are both phenomena of cell division. These are very important processes occur in a human cell, not only in a human cell, all living cells, including plants, animals, and human beings. Why we need to reveal the secrets of cell division? Have you any wondering about things that when zygote formed, how it comes into an individual, and when leaves fall, how leaf produce again leaf. बहुत दफ़ा ऐसा होता है बेटा कि हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी डैमेज होती हैं, बॉडी की वुंड्स आते हैं, दैट रिपेयर्ड इन आफ्टर पासिंग अ टाइम, बहुत टाइम गुजरने के बाद उन पे क्रून्स आते हैं और वो रिपेयर्ड हो जाती हैं. हैव यू एनी वंडर हाउ दिस phenomena occur? These phenomena occur due to the cell division. Cell repair itself, cell grow itself, cell divide to produce its own kind of cells. And the need is that cell have a small lifetime. Everything has a short lifespan, and after that it die. So cell also die, and before its death, it produce its new own kind of generation to continuity of life. So now we come back to our topic, which is mitosis and meiosis. First of all, we discuss about mitosis phenomena, then we discuss one by one meiosis phenomena. First, we introduce the mitosis. Mitosis is a process of division in which chromosomal number retained. How it retained? It retained as a parent's chromosomal number. You can say, you can define this process that mitosis is a process of division in which parent cell divide into two daughter cells which are identical in not only genetically but physically, phenotypically identical to their parents. Now, if we discuss about the location of mitotic division, the mitotic division occur in the somatic cells. What are the somatic cells? Somatic cells are called all body cells except gamete cells or sexual cells. Sex cells are different from the somatic cells and their location are different. Somatic cells are found in our all body and sex cells are present in sex organelles and genitals. Now that third one is the purpose of mitotic division. Why mitotic division needed? Mitotic division are necessary for growth. When zygote form, mitosis is necessary to grow up into a fetus, into an individual, whole individual, alike the parents. When after birth, baby grow, it's due to the process of mitosis. And their organ grow, their bones grow, their muscle grow. All growths of cells occur due to the process of mitosis. And after attaining the growth, when we attain the whole growth phenomena, we become adult. When our growth ceases, heighted growth and body growth not cease, because our body, when our heights cease, our body grow in a width as a form of fats and a form of body muscles. But mitosis also involved in another phenomena which is called repairing. Have you ever seen that our body damaged from cut, and after few 15 days, 10 days, our cut repaired? How it repaired? This repaired due to the process of mitosis. And it's also necessary for regeneration. Where the regeneration occur? Regeneration occur in not only animals such as starfish who regenerates its arm. Regeneration occur in animal like lizard which fall its tail
in a form of fear and fight, and after few days its tail regenerate again due to the process of mitosis. And in human body, where regeneration occur, in human body when our some organ damaged due to some diseases or due to accidentally injuries, our organ regenerates again, like liver and like some cells of special kind of cells of tissues which let's start to discuss about the phases of mitosis. Now we discuss the phases of mitosis by the help of diagram. Also, before draw diagram, I discussed that these phases are we divided into main two phases. One is called nucleokinesis and second is called cytokinesis. In the nucleokinesis phase, first the phase that occur is interphase. This occur in both cytoplasm and both in nucleus. In this phase, as you know, that cell prepare itself for division in the process of interphase. सेल प्रिपेयर करता है, बच्चे अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है? इट अकोमुलेट some kind of material to form, to synthesize DNA for replicate DNA, and they produce different kinds of DNA material. DNA material produced in a cell during the process of during the phase of interphase. And also meanwhile all cytoplasm activate to divide process, and organelles become doubled because they involve in cell division, and they divided one by one. One goes in one daughter cell and other goes in the second daughter cell, so that in interphase DNA materials are prepared, DNA accumulate and combine in a form of thread-like structure, and interphase organelles divide and double. Meanwhile, in some cells, like in animal cells, where the centromeres are present, centrioles are present, they divide to form for the spindle fiber formation. These centrioles divide and goes in the opposite sides of pools. One centriole divide into two centriole and goes to the opposite side of cell. Here is a nucleus present. Okay. उसके बाद जो second process start होता है, this is called prophase. Pro mean before phase, यानी शुरू की phase, उसको हम prophase का नाम देते हैं. This is the main phase of nucleokinesis. Nucleokinesis start from prophase and end at the telophase. प्रोफेज में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो मेन मैं आपको यहाँ लिख के बताऊंगी कि सबसे पहला प्रोसेस प्रोफेज में क्या होता है. प्रोफेज के अंदर सबसे पहले आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स अकोमुलेट होते हैं और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहा जाता है क्रोमाटिड. एक जैसे क्रोमोसोम्स के मटेरियल कंडेंस होके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम नाम देते हैं क्रोमाटिड का. और ये क्रोमाटिड अपने ही जैसे क्रोमाटिड के साथ पेयर करता है और उस पेयरिंग को हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमाटिड. ये एक पेयर बन जाता है जो कि सेंट्रोमियर के मुकाम पे एक दूसरे के साथ एट द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर. ये सेंट्रोमियर, व्हाट इज द सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर इज अ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर. प्रोटीन की एक फॉर्म होती है जो कि उनको बाइंड करने का काम करती है. ये साइट है जहाँ पे ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं. ये फिनोमेना किस फेज में होता है? प्रोफेज में. प्रोफेज में एक फिनोमेना ये होता है कि सेंट्रोमियर्स के साथ सिस्टर क्रोमाटिड्स बनते हैं. सेकेंड फिनोमेना जो होता है वो क्या है कि प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस जो कि यहाँ पे मौजूद होते हैं, ऑर्गेनेल्स होती हैं छोटी छोटी, वो डिसअपियर हो जाती हैं.
Meanwhile, nuclear membrane also disappear. ये मैं जो खत्म कर रही हूँ वॉल, एक मेम्ब्रेनियस पार्ट है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है, ये भी डिसअपियर हो जाते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं. जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, थर्ड फिनोमेना क्या होता है कि आफ्टर डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं. दिस इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि वन सेंट्रियोल से रन करती हैं टुवर्ड द सेकेंड सेंट्रियोल. दोनों सेंट्रियोल्स को स्पिंडल फाइबर आपस में डिसजंक्शन करती हुई आती हैं और ये एक यूँ समझ लें कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसा कि वेब होता है ना उसका, स्पाइडर का, उस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. अब ये 3 प्रोसेसेस मैं अगेन रिपीट करूंगी. कौन कौन से प्रोसेसेस? क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्म करना, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, और थर्ड वन जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर है उसका रन करना टुवर्ड द सेंट्रियोल्स. दोनों सेंट्रियोल्स का स्पिंडल फाइबर को बिटवीन सेंटर ऑफ द सेल रन करवाना और एक पूल क्रिएट कर देना, जनरेट कर देना. ये प्रोसेस, होल प्रोसेस अकर होता है प्रोफेज में. प्रोफेज के बाद जो नेक्स्ट फिनोमेना स्टार्ट होता है, दिस वन इज कॉल्ड मेटाफेज. What is the occur in a metaphase process? मेटाफेज प्रोसेस में क्या फिनोमेना होता है? मेटाफेज प्रोसेस के अंदर बच्चों, ये जो स्पिंडल आपने भी सुना, मैंने बताया आपको कि क्रोमेटिड्स बनते हैं. ये क्रोमेटिड्स अपने सेंट्रोमियर के साथ यहाँ पे अरेंज होना शुरू हो जाते हैं या अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं. और ये अरेंजमेंट किस तरह की होती है? दिस अरेंजमेंट इज नॉट लाइक दिस, जिसे मैंने बनाई एक लाइन की शक्ल में अरेंज करते हैं. दिस इज वन लाइन. दिस मैं यहाँ पे जस्ट आपको 3 बना के दिखाऊंगी कि ये 3 इस स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर एक तरतीब से वर्टिकली लाई करते हैं. बिल्कुल एक वर्टिकल पोजीशन में लाई करते हैं फ्रॉम देयर सेंट्रल पोजीशन, जहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर होता है ये स्पिंडल फाइबर के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है. दिस अटैचमेंट, व्हाट द रीजन ऑफ दिस अटैचमेंट? इस अटैचमेंट की रीजन ये है कि जब नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसमें ये सेपरेशन होती है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स होते हैं, उन प्रोसेसेस के अंदर ये ब्रेकिंग होती है सेंट्रोमियर से. यहाँ से ब्रेक होने से स्पिंडल फाइबर श्रिंक करता है और स्पिंडल फाइबर बैक टुवर्ड द सेंट्रियोल मूव करता है. दैट्स व्हाई दीज अलाइज ऑन द सेंट्रोमियर. आप यहाँ पे सिर्फ यही फिनोमेना मेटाफेज के अंदर अकर होता है. व्हाट द फिनोमेना? कि क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड अरेंज देमसेल्फ ऑन द स्पिंडल फाइबर in a vertical position, in a special position in the center of spindle fiber. Third phase is called anaphase. In the phase of process, this phase, these centromere break from this area. यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यही जो आपको अभी मैंने सिस्टर क्रोमेटिड्स का बताया कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो अरेंज हुए थे, 2 क्रोमेटिड्स, ये यहाँ से अपने आप को ब्रेक करेंगे सेंट्रियोल के दरमियान से और ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा स्पिंडल फाइबर. इन अ फेज ऑफ, आई अगेन रिपीट, इन अ फेज ऑफ एनाफेज हमारी स्पिंडल फाइबर श्रिंक करती है और ये सेंट्रियोल उनको पुल बैक करता है ऑपोजिट पोल की तरफ. और यहाँ से जो सेंट्रियोल है, अगर आपको मैं यहाँ पे अलग से बना के दिखाऊं कैसे ये ब्रेक होगा, दिस इज a form of sister chromatid. This area is break. ये स्पिंडल फाइबर अपने आप को पुल बैक करती है, जैसे मैंने एरो से शो किया,
और यहाँ से ये इसको ब्रेक कर देती है। ये स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो जाता है, ये स्पिंडल फाइबर का इसको इसको यहाँ डिटेच कर देती है, इसको यहाँ से डिटेच कर देती है। और सेंट्रियोल जब डिटेच होते हैं तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट होके ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू होते हैं इन द फेज ऑफ एनाफेज। आफ्टर पासिंग एनाफेज दीज, जब ये क्लोज टू द सेंट्रियोल्स आते हैं तो ये फेज कहलाती है टीलोफेज एंड द फेज ऑफ टीलोफेज। नाउ वी डिस्कस फिफ्थ स्टेज which is called telophase. Telophase is a phase in which when chromosomes chromatid are come back toward the centriole and reach at their destination, they formulated in a form of nuclear membrane again regain and centriole disappeared. Spindle fiber disappeared at this stage in the of the telophase and nuclear membrane formed here. Also nucleolus also reappeared in this stage. And the third one work is that some invaginations formed between the in the center area of cytoplasm to divide the cytoplasm into. But the main division occur of cytoplasm in cytokinesis. In the phenomena of cytokinesis, the whole cell membrane formed between these two nucleus, daughter nucleus, and along this cytoplasm division, organelles, doubled organelles also divided one and one form in two identical cells. These two cells that forms are called identical daughter cells. Why these are called identical daughter cells? Because these cells retain their chromosomal number as their parents. Parents' chromosomal numbers are, if we consider that in a human cell, 46 chromosomal number was in a parent cell, and when the daughter cell formed, they also contain 46 chromosomal number in their daughter cell. They are totally identical in genetically and also phenotypically. These whole process are occurring in a mitosis phenomena, mitosis division, cell division. If we summarize this, that the phenomena are include these stages: first prophase, then metaphase, then anaphase, telophase, and then cytokinesis. In prophase stage, if we summarize literally, main processes occur are: number one, pairing of chromatin materials and forming a sister chromatids, and spindle fiber formation, disappearing of nucleolus, disappearing of nuclear membrane. In metaphase, arrangement of chromatids in a spindle fiber in a vertical position, in up to down positions along the centromeres. In anaphase, spindle fiber pulled back by the centrioles, pulled back by the centriole, and the centromere divided due to this pulling force, and both sister chromatids separated. One chromatid sister goes along the one side and other goes second side. In telophase, when they reach at their destination, center of these two areas near to the centriole disappeared, spindle fiber disappeared, and nuclear membrane reappeared, nucleolus reappeared, and around these chromatids, and these chromatids also uncoiled and again take the position as it was
before the process of mitosis in interphase. After this uncoiling, cytokinesis phenomena occur. In cytokinesis, cytoplasm divide and in two parts. You mean say whole cell divided into two different cells. One cell. These phenomena was occurring in a single cell. But after cytokinesis, two daughter cells formed, and these two daughter cells retained their original chromosomal number as the parent's chromosomal number. And this was whole process of mitosis. Like, subscribe and share. Allah Hafiz.